श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः। श्री श्री चंडी अथ देवी सूक्तम् अहं रुद्रेभिरित्यादिमन्त्रस्य ब्रह्मद्या ऋषयो गायत्र्यादीनि छन्दांसि अद्य देवी देवता देवी सूक्त जपे विनियोगः। ओम अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेव्यै अहं मित्रा वरुणोभा विभरिमहमिन्द्राग्नि अहमश्विनोभा अहं सोमोमाहनसं विभरिमहं तष्टारमुतपुषनं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्यमति सुप्राव्ये यजमानाय सुन्नति अहं राष्ट्री संगमनि वसुनां चिकितुषी प्रथमायज्ञानं ताम् आदेवा वेदधूः पुरुत्रा भूरिस्थात्रं भूरिया विशयन्तीम् मयासु अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्ष्यन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्दिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हन्तवायु अहं जनाय समदं कृणोम्यहं देवा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप् सन्तसमुद्री ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वतामुद्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वातैव प्रभाम्यारभमना भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेन पृथिव्यै तावती मोहिना सम्बभूव। ॐ तत्सत् इति ऋग्वेदोक्तदेवी सूक्तं समाप्तम्। अथ अर्गलस्तोत्रम्। अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषि अनुष्टुप छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ जय देतं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मधुकैटवविध्वंसि विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशि विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि निशुम्भशुम्भनिर्नाशि त्रैलोक्यशुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्तरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवदिभो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्यधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ति पापनाशिनी
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परम सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विधेहि देवी कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विधेहि दिशतं नासं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सुरासुरशिरोरत्र निगृष्टचरणाम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि प्रचंड दैत्यदर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदये अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि तारिणी दुर्गसंसार सागरस्याचलद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् इत्तरगलस्तोत्रं समाप्तम्। अथ किलकस्तवः अस्य किलकस्तवमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः समार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सूयोऽपि क्षमोमवाप्नोति सततं जपतत्परः सिद्धन्तुच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्यपि सेत्सन्ति लोके शङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुज्जं चकारसः स प्राप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्निमन्त्रिणां सोऽपि क्षममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलीनां विधायिनां चण्डीं जपति नित्यसा स सिद्ध स गणः सो यथा गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवा पाटवं तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत य कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यादि च यत्किञ्चिदृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं सदा सनोस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्
ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तुवते सा न किं जनोई चण्डिकां हृदयेनापि यः स्मरेत् सततं नरः हृदं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् अग्रतोऽयं महादेव कृतं किलकवारणं निष्किलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितो इति किलकस्तवः समाप्तो। अथ देवी कवचम्। अथ देवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिरनुष्टुप् महिषमर्दिन्यादयो देवता देवी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ शतानीकोवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ॐ ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुसुमण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीति नवदुर्गा प्रकृतितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादज्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयारता शरणमगता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीं यस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्था च चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवीश्वरी वृषवाहना इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता श्रेष्ठश्च मौक्तिकै सर्वा दिव्यहार प्रलम्बिभिः इंद्रनीलोरि महानीलोई पद्मरागै सुशोभनै दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलञ्च मुसलायुधं खेटकं तमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं च खड्गं च सारंगायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवतानां हिताय वै नमस्ते अस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मां इन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे चैव वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां वायुदेवता उदीच्यां पातु कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मी च मां रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दोषो दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे दूतिनी रक्षेदु मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवोर्मध्ये यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्दारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले च शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च मया महामाया च तालुके कामाक्षा चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूबरी
स्कंधयो खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलिस्तथा नखान सुरेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेन नरेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये लोलिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेद गुज्जम गुज्जेश्वरी तथा मेढ्रम रक्षतु दुर्गंधा पायु मे गुज्जवासिनी कोट्यम भगवती रक्षे दुरु मे मेघवाहना जंघे महाबला रक्षे जानु माधव नायिका गुल्फयोर्नरसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पदांगुलिः श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चोर्ध्वकेशिनी रोमकुपानि कौमारी तचं योगेश्वरी तथा रक्तं मांसं वसं मज्जामस्ति मेदश्च पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कक्षे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता तु मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्तं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु पार्वती यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रोमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा मार्गं क्षेमं करी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं च यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी दुर्गे दुर्गापहारिणी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं देवास्तु कवचेनैव मरक्षित तनुः सुधी पादमेकं न गच्छेतु यदीच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रावतिष्ठते तत्र तथा तत्रार्थलाभः स्याद्विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तमाप्नोति लीलया परमैश्वर्यमतुलं प्राप्नोत्यो विकलः पुमान् निर्भयो जायते मरितः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये च भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिछन्दं श्रद्धयान्वितः देवी वश्या भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्यधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं वापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव कुलजाश्चोपदेशजा सहजा कुलिका नागा डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्नश्च महारवा ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गन्धर्वनराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेनावृतो हि यः मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्ति वृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा कवचमादितः निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डीजपसमुद्भवा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां जपकर्तु हि सन्ततिः देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं सम्प्राप्नोति मनुष्यो यशो महामाया प्रसादतः तत्र गच्छति भक्तो यशो पुनरागमनमनो हि लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे श्रीहरिहरब्रह्मविरचितं देव्या कवचं समाप्तम्। ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय नमः।
ओं देव्यै नमः ओं सरस्वत्यै नमः ओं वेदव्यासाय नमः ओं ब्रह्मणे नमः ओं ब्राह्मणेभ्यो नमः ओं तत्सत् ओं सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रात्रिसूक्तः ऋग्वेद दशम मंडल दशम अनुवाक 127 सूक्तः। रात्रिति सूक्तस्य कुशिक ऋषिः रात्रिदेवता गायत्री छन्दः श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठादौ जपे विनियोग। ओं रात्रिव्याख्यादायति पुरुत्रा देव्यक्षभिः विश्वायधीश्रियो यधिता और्वप्रायमरितो निवतो देव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः निरुषसारमस्कृतो शशं देव्यायति अपेदुहासते तमः सा नो यद्यस्या वयं नीतयमन्यो वीक्ष्महि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामासो यवीक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निशेनासश्चिदर्थिनः यावया वृकं यवयस्तेन मुरिमे अथानः सुतरा भव उपमापेऽपि सत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित उशरिणेव यातय उपते गायिवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः रात्रिस्तमं न जिगुषे इति ऋग्वेदोक्तं रात्रिसूक्तं समाप्तं। सामविधान ब्राह्मण तृतीय अष्टम अनुवाक द्वितीय सूत्र। ओं रात्रिं प्रपद्ये पुनर्भूमयो भूमकन्यां शिखण्डीनीं पाशहस्तं युवतीं कुमारीनिमादित्यः श्रीचक्षुषे बान्तः प्राणाय सोमगन्धाय आपः स्नेहाय मनः अनुज्ञाय पृथिव्यै शरीरम् इति सामविधान ब्राह्मणोक्तं रात्रिसूक्तम्। ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। प्रथमचरितस्य ब्रह्मा ऋषिर्महाकाली देवता गायत्री छन्दो नंदा शक्तिरक्तदन्तिका बीजमग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं महाकाली प्रीत्यर्थं जपे विनियोग। प्रथम चरित्र। ओम अस्य श्री प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषिर्महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तमम् ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थ जपे विनियोग। श्री महाकाली ध्यानम। ओम खड्गम चक्रगदेषु चापपरिघान शूलं भुषुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करु स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमाश्च पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोच्छयिते हरो कमलजो हन्तुं मधुमुकैटभं। मध्यमचरितस्य विष्णुऋषिर्महालक्ष्मीदेवता उष्णीच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिर्दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोग। महालक्ष्मी ध्यानम्। ओम अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। उत्तरचरितस्य रुद्र ऋषिः सरस्वती देवता अनुष्टुप छन्दो भीमा शक्तिर्भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थं जपे विनियोग। महासरस्वती ध्यानम्। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनोभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं यथ ऋष्यादिन्याः शिरसि ओं ब्राह्मणे ऋषये नमः।
मुखे ओं गायत्री छंदसे नमः हृदि ओं महाकाल्यै देवतायै नमः ओं पुनः शिरसि ओं श्री विष्णवे ऋषये नमः ओं उष्णीषे छंदसे नमः ओं महालक्ष्म्यै देवतायै नमः ओं रुद्राय ऋषये नमः ओं अनुष्टुभे छंदसे नमः ओं महासरस्वत्यै देवतायै नमः।